Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I am going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language, and their usage in sentences. So each word is divided into two parts with the help of apostrophe symbol. We need to stress on the word before the apostrophe for correct pronunciation. So here are the next set of 25 words. First word is alter, to change or modify. Alter को हम हिंदी में बदलना कहते हैं, उर्दू में बदलना, तेलुगु में मार्चू. For example, she decided to alter the color scheme of the room by painting the walls. Next word is altercation, to argue or quarrel vehemently. ऑल्टरकेशन को हम हिंदी में झगड़ना कहते हैं, उर्दू में बहस करना, तेलुगु में विवादम चेयू. फॉर एग्जाम्पल, द नेबर्स कंटिन्यूड इन ऑल्टरकेशन ओवर द प्रॉपर्टी बाउंड्री. नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्टरनेट, ऑकरिंग और फॉलोइंग बाय टर्न्स, टू टेक टर्न्स और टू एक्सचेंज प्लेसेस. ऑल्टरनेट को हम हिंदी में विकल्प कहते हैं, उर्दू में मुताबदल, तेलुगु में वैकल्पिका. For example, they had to work on alternate days to ensure coverage during the holiday season. Next word is although, in spite of the fact that, however. although को हम हिंदी में हालांकि कहते हैं, उर्दू में हालांका, तेलुगु में आइनपटिकी. For example, although it was raining, they decided to go for a picnic. Next word is altitude, द हाइट अबोव सी लेवल और ग्राउंड. एल्टीट्यूड को हम हिंदी में ऊंचाई कहते हैं, उर्दू में बुलंदी, तेलुगु में एत्तू. फॉर एग्जाम्पल, द प्लेन रीच्ड एन एल्टीट्यूड ऑफ 30,000 feet ड्यूरिंग द फ्लाइट. नेक्स्ट वर्ड इज ऑलवेज, एट ऑल टाइम्स, कंटिन्यूसली. ऑलवेज को हम हिंदी में हमेशा कहते हैं, उर्दू में हमेशा, तेलुगु में एल्लपुडू. For example, she always arrives at the office early to start her day. Next word is amateur, a person who engages in a pursuit, especially a sport, on an unpaid or unprofessional basis. Amateur को हम हिंदी में शौकीय कहते हैं, उर्दू में आम आदमी, तेलुगु में अभिलाषी. For example, he was an amateur photographer who loved capturing moments in his free time. Next word is amaze, to fill with great surprise or sudden wonder, to astonish. amaze को हम हिंदी में चौंकाना कहते हैं, उर्दू में हैरत ज़दा करना, तेलुगु में आकट्टुकोचु. For example, the magician's tricks never fail to amaze the audience. Next word is ambassador, an official representative of a country sent to another country, typically as a diplomatic representative. एम्बेसडर को हम हिंदी में दूत कहते हैं, उर्दू में सफ़ीर, तेलुगु में राजदूतू. फॉर एग्जाम्पल, द एम्बेसडर वर्क टू स्ट्रेंथन डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन द टू नेशंस. नेक्स्ट वर्ड इज एम्बियंस, द कैरेक्टर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस, द सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट. एम्बियंस को हम हिंदी में वातावरण कहते हैं, उर्दू में माहौल, तेलुगु में परिसरम. For example, the restaurant had a cozy ambience with soft lighting and comfortable seating. Next word is ambiguity, the quality of being open to more than one interpretation, uncertainty or inexactness. Ambiguity को हम हिंदी में अस्पष्टता कहते हैं, उर्दू में कशमकश, तेलुगु में अस्पष्टता. For example, the ambiguous statement left room for various interpretations, causing confusion. Next word is ambition, a strong desire to achieve something or to succeed, often requiring determination and hard work. Ambition को हम हिंदी में महत्वाकांक्षा कहते हैं, उर्दू में ख्वाहिश, हौसला, तेलुगु में उद्दीपना. For example, her ambition to become a renowned scientist led her to pursue a PhD in physics. Next word is ambitious, having a strong desire for success or achievement, showing determination to succeed. Ambitious को हम हिंदी में महत्वाकांक्षी कहते हैं, उर्दू में हौसलामंद, तेलुगु में उद्दीपकंगा.
For example, the young entrepreneur had ambitious plans to launch multiple startups. Next word is ambivalent. Having mixed feelings or contradictory attitude towards something or someone. एम्बिवैलेंट को हम हिंदी में द्विधारी कहते हैं, उर्दू में कशमकश, तेलुगु में द्वंद्व भावम. For example, she felt ambivalent about accepting the job offer as it required relocating to a new city. Next word is amend. To make corrections or improvements, to change for the better. Amend को हम हिंदी में सुधारना कहते हैं, उर्दू में तब्दील करना, तेलुगु में मार्पु चेयडम. For example, the committee voted to amend the proposed legislation before final approval. Next word is amenity. A desirable or useful feature or facility, a pleasant or comfortable quality. Amenity को हम हिंदी में सुविधा कहते हैं, उर्दू में सहूलत, तेलुगु में सौकर्यम. For example, the hotel offered various amenities including a swimming pool and a fitness center. Next word is amiable. Friendly and pleasant, having a pleasant and good-natured disposition. Amiable को हम हिंदी में आत्मीय कहते हैं, उर्दू में दोस्ताना, तेलुगु में सौहार्दमुगा. For example, the amiable receptionist welcomed guests with a warm smile and helpful attitude. Next word is amicable, characterized by friendliness and lack of hostility, showing goodwill. Amicable को हम हिंदी में मैत्रीपूर्ण कहते हैं, उर्दू में दोस्ताना, तेलुगु में सौहार्दमुगा. For example, the negotiation between the two parties was amicable, leading to a mutually beneficial agreement. Next word is amity, a friendly relationship, peaceful harmony between people or nations. Amity को हम हिंदी में मैत्री कहते हैं, उर्दू में दोस्ती, तेलुगु में सौहार्दम. For example, the treaty was signed to promote amity and cooperation between the neighboring countries. Next word is ammunition, projectiles, bombs or other material used in warfare, the supplies or materials for military use. Ammunition को हम हिंदी में गोली कहते हैं, उर्दू में गोला बारूद, तेलुगु में आयुधम. For example, the soldiers loaded their rifles with ammunition before heading into battle. Next word is amnesty, official pardon for people who have been convicted of political offences, a general pardon. Amnesty को हम हिंदी में आम माफ़ कहते हैं, उर्दू में आम माफ़ी, तेलुगु में क्षमापणा. For example, the government declared amnesty for political prisoners as a gesture of reconciliation. Next word is ample, more than enough, abundant. Ample को हम हिंदी में प्रेरक कहते हैं, उर्दू में बहुत सा, तेलुगु में पूर्ति. For example, the spacious kitchen provided ample room for cooking and entertaining guests. Next word is amplify, to increase the volume or intensity, to enlarge or expand upon a topic. Amplify को हम हिंदी में बढ़ाना कहते हैं, उर्दू में बढ़ाकर बताना, तेलुगु में पेंचू. For example, the speaker used a microphone to amplify her voice and reach the entire audience. Next word is amputate, to surgically remove a limb or part of a limb. Amputate को हम हिंदी में काटना कहते हैं, उर्दू में काटना, तेलुगु में चेरिचिवेयु. For example, the doctor had to amputate the injured leg to prevent the spread of infection. Next word is amulet, an object, often a small charm or ornament, believed to bring good luck, protection or ward off evil. Amulet को हम हिंदी में ताबीज़ कहते हैं, उर्दू में तावीज़, तेलुगु में रक्षा. For example, she wore a jade amulet around her neck, believing it would bring her good fortune and protect her from harm. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.